So again, good morning student. Welcome to the science class. Okay. So everyone close your maths book. Now today I am going to start a new chapter. Okay student. That is chapter 8. Chapter 8 birds. Okay. Chapter 8 is bird. So today it is only explanation of the chapter and I am reading this chapter. Okay student. So everyone check out your science book and open page number 77. Take out first. Taken. Now see here student. Everyone open. Now page number 76. I am reading the chapter. Okay, you follow me. Now see. Priya and Rahul were playing hide and seek in the park. Okay, it was Rahul's turn to hide and Priya had to locate him. Priya closed her eyes and Rahul hid behind a thick tree trunk. Rahul saw that two birds were striking each other with their beaks, feet and claws and flapping their wings. Rahul became curious and asked about it to his father. He told that birds use their beaks, feet, and claws to catch and feed on their prey. They also use them to protect them from their enemies. Okay student? So हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? We are going to study about the birds and the different types of body parts of the bird. That is feet, claws, then feathers, wings. Okay, ये सब चीजें होती हैं birds का and about the birds nest. So now see, birds are the only animals with feathers. जो feather होती हैं वो सिर्फ birds में होते हैं. Now feathers help them fly and stay warm or cool in different climates. Birds use their beaks to get their food. Their feet and claws help them to hold the branches tightly. Now, like their beaks, their feet and claws are also made suitable for different purpose. Now, beaks of birds. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? Beaks of bird. Birds की जो beak होती है वो हम लोग पढ़ेंगे. Okay? Now, beak. Beaks of birds. Okay? Beak, you know. Suppose this is bird. ओके एंड ये जो है दिस वन इज बीक. ओके, ये जो है इसे बीक बोलते हैं. सम आर हैविंग like this beak. ठीक है, some are having like this beak. Okay, some beaks are like this. So different types of beaks are there. Now see, crushing beak. Number one is what? Crushing beak. Okay, crushing beak जो होती है, many birds have pointed, short and hard beak. Birds such as pigeon and sparrow have such beak. They use it for crushing grains and seeds. Okay, crushing जो होती है वो short होती है and pointed होता है. तो ये किसका होता है? pigeon. Okay, pigeon की beak होती है short. I am drawing here. See, this one is like this.
ओके, दिस टाइप की बीक होती है. दिस वन इज शॉर्ट बीक. नाउ नंबर 2 इज कर्व्ड. कर्व्ड और हुक्ड. कर्व्ड और हुक्ड होती है. तो some birds like parrot have curved beak. This type of beak have curved front that helps a bird in cracking fruits and nuts. ये जो होती है ये पैरेट में पाई जाती है. कर्व पैरेट. ओके, पैरेट में होती है कर्व्ड एंड हुक. ये जो बीक होती है वो बीक होती है लाइक दिस. ओके, इस टाइप की बीक होती है और ये पैरेट में होती है. ओके स्टूडेंट. नाउ नंबर 3 इज हार्ड. हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक. ओके, कर्व्ड बीक. ये जो होती है बीक वो हार्ड होती है एंड स्ट्रॉन्ग होती है. ये बीक किसमें पाया जाता है? ईगल, वल्चर, आउल, ये सब जो होते हैं इनकी जो बीक होती है वो हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक होती है. ओके स्टूडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. नंबर 4 इज ब्रॉड and flat beak. Flat beak, it is also known as shifting beak. Okay, flat beak means shifting beak and it is found in duck. ये duck में होता है. ये beak जो होती है, see here pictures, ये इस टाइप की होती है. flat होती है. ओके, एंड ब्रॉड भी होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है. So many water birds such as duck and goose have flat and broad beak with small holes on both side. Small holes होते हैं both side. Okay, both side. Such beak is called shifting beak. Birds having shifting beak take in muddy water which has small insects and worms. ये जो इनकी बीक होती है वो मडी वाटर में इंसेक्ट्स को और वॉर्म्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. नाउ लॉन्ग, स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग चाइजल शेप्ड बीक. नाउ स्ट्रॉन्ग चाइजल शेप्ड beak. Okay, it is found in many birds such as woodpecker and whoop have long, straight and strong chisel shaped beak. Okay, so this beaks helps them to drill holes and pick insects from the trees. Trees जो होती है, tree trunk जो होता है उसमें ये woodpeckers वो ट्रंक में क्या करते हैं? ये होल करते हैं. ओके, ट्री ट्रंक, दिस वन इज ट्री ट्रंक. ओके, और यहाँ पे ये होल कर क्या करते हैं वुडपेकर्स? उसमें से इंसेक्ट्स को निकाल कर वो खाते हैं. ठीक है. नाउ लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. नंबर 6 इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. ये जो होता है ये आपका हमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स जो होते हैं हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड टीथ. दे यूज इट फॉर शकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स में से नेक्टर्स निकालने के लिए ये जो लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक होती है वो हेल्प करता है. तो दैट इज व्हाट आंसर इज हमिंग बर्ड में होता है. ओके स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट इज 7 नंबर इज स्टिकी बीक.
स्टिकी बीक जो होती है वो शॉलो में होती है, विच फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, हैव स्मॉल ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग स्टिकी बीक. ओके, तो ये होता है आपके swallow में. Okay students, swallows में. So these are 7 types of beaks found in the birds. Okay, so see on the whiteboard. Okay, so these are the 7 types of beaks found in the birds. Okay, so understood? Now come to page number 79. Some questions are there. Page 79. Okay, now see here, match the following columns, column A with column B. Okay, number 1, match the column. Okay, so number 1 is strong curved beak. Number 2, sharp pointed beak. Number 3, broad flat beak. Number 4, short pointed beak. And number 5, sticky beak. Okay, so I am writing the answers. Okay, strong curved beak. स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक जो होती है वो किसकी होती है? पैरेट की. ओके, आंसर इज पैरेट. नाउ शार्प पॉइंटेड टीथ. शार्प एंड पॉइंटेड टीथ इज woodpecker. woodpecker. These are the answer. Okay, मैं आंसर लिख रही हूँ. Now broad and flat beak. Broad and flat is duck. Broad and flat beak is of duck. Now short pointed beak is sparrow, and sticky beak is of swallow. So do the answer. Done. Now see, choose the correct answer. Number 2, choose the correct answer. So number 1 का answer है the smallest bird that suck nectar from the flowers with a long pointed beak is hummingbird, sparrow, swallow. Answer is hummingbird. Okay. Number 1A. Hummingbird.
Number 2. Swimming birds like duck and geese have curved beak, shifting beak, sticky beak. Ducks and geese की जो beak होती है वो shifting beak होती है. Okay? So answer is B, second. That is shifting beak. Number 3. A bird with a chisel-shaped beak is called. Chisel-shaped beak किसकी होती है? Woodpecker की होती है. तो answer is C. Woodpecker. Okay, student. So done. These are all about the birds' beak. Okay, beaks of the birds. And in the next class, I will teach about the feet and claws of the birds. Okay, student. So till then, please read the chapter 8 very carefully. Okay, and also learn these exercises. Match the columns and choose the correct answer. So this you have to learn and read the chapter. Okay, student. So till then, keep learning, keep practicing, and stay home, stay safe. Bye.